So now tell me, if you have any doubt from the previous session, you can ask me. Anybody have any doubt? Payal, Rabia, Ranjita, Shruti, and Sukesh? No, sir. No, sir. No, sir, got it. Okay. Okay. So first of all, good. Two persons have just completed the assignment, and that was good. I will say that everybody, please try to spare some time for your assignment also, because these small assignments are going to give you a confidence in learning Java. Okay, so today I'm going to start a topic that is called string. So let me show you. Okay, so so let me take the example of this one, like creating a class. For example, I'm creating the class of name practice. Just simply say practice. So if I ask anybody, what do you mean by string? Anybody know what is string? If you want to define a string, what you will say about the string? Or you can say we say string in Java, but in real world we call it word. Yes or no? For example, string is something like that. When we are talking about a string, string means we can declare a string variable like str and g string. Str, just take the variable name str1 and equal to, you can write equal to something like that. For example, I can write Pradeep. So if I will ask you what is string, anybody can define the string? Try. Pyle, you want to try? Yeah, string is like we usually use this keyword to define a name, like alphabetical, like whatever the alphabetical name if we want to give, we'll write the string. We use the string. Yeah. So yeah, you are very close to that. You can say you have actually defined the right definition of that. And if you want to define in a, you can say some proper words. So how we can define it? We can say string is a actually string is a sequence of alphabets. Because string is a sequence of alphabets or characters. Right or wrong? You can take the example. If I'm talking Yes, about yes. this one, if you're talking about this one, you can say TEA. So if I will say what is this T? T is actually a string, or you can say in the real world it is known as word. So T is a actually sequence of characters T, E, and A. Yes or no? So actually string or word is a sequence of characters or alphabets, right? And why I'm saying that, it is a sequence of characters, because it when you will change the sequence, so it can create some other word. So if I can change, can anybody tell me what other word I can make with help of these three alphabets? कोई और word बन सकता है इससे? Can we create any other word जो TEA तीन alphabet से बन के कोई और word बने जो meaningful हो? Yes. Eat. Yes. So that's why I'm saying that we can, if we are putting the T at first position, E at second position, and A at third position, so we are creating a word, we are creating a string that is called T. And if you will change the sequence, if we'll put the, you can say something like that, string, str2. So we are using the same, we can say we are using the same alphabet, same characters, but this time we are saying E. If you want to Read. Yeah, so let me write in small, so here we can, so that everything will be same. EAT. So you can say in the both the string and both the words, alphabets are same, right? So sometimes people say that in the interview they provide the definition of string, that a string is a collection of alphabets. So that is not a proper definition, because collection of words means it can be a T, it can be a E. So it also matters that what is the sequence of characters. Are you getting my point? In the first one, you are putting the T at first place, E at second place, and A at third place. So same thing, whenever you will try to teach word definition to your kids also, always use this thing, because it is very, very important. Getting my point? So now what we can say, string is a collection of words in a proper sequence. Okay? So this is called string. And when we say that string is a collection of alphabets or characters in a sequence,
then internally Java also treats it as a sequence. तो कैसे sequence करती है? I will tell you. What happens that the first one it consider at position 0. So internally क्या करती है Java जब इसको store करती है, so it do not store the whole string just like a one. It is store it internally as a sequence of alphabet. जो सबसे पहला sequence होता है उसको position को नाम देती है 0. It is start the position from 0. So at 0 place you will get T. Yes or no? And first place you will get E. And second place you will get E. A. My point. So in the second case, if you will talk about the second string, you will get at the 0 place, you will get the E. At first place, you will get A. And at third, you can say at third place or second indexing, you can say you will get T. So this is very, very important to understand that internally Java stores the string in the form of indexing. It is stored, it every time it's stored. When it's stored this string and when this store this string, it is storing that, okay, we have 3 alphabets. Also maintain the sequence that at the first position, or you can say first position means 0 indexing. It starts indexing from 0. So at 0 position, it's storing T, 1 position E, and second you can say indexing at. Getting my point? So on the basis of this, you will see string class. This is the string class which is used as a data type to store the string variable. So आपने देखा होगा, if you take the example of a student class. So student class में usually whenever we want to store any string data, any alphanumeric data, we always use string class. Getting my point? Yes. ठीक है, चले अब देखते हैं how many functions are available in this string. Because string is a class, so it contains multiple functions. String a class है which contains multiple functions. So how we can find the functions in it? Just try to do one thing. We have created a string str equal to T. So now you will say str1 reference variable dot. So you are able to see so many functions are there. So actually these functions are very, very important. And in Java, the string is a class which is very, very widely used. The string class is very, very widely used. So you will see how many functions are there. And in the interview, whenever interviewer asks you to write some program to check your logic, they also ask you that try to write some program based on a string and based on some, you can say, some numeric also. So basically, you will see more than 50% programs they ask that is totally based on string. So we have to learn the functions which are available in the string class. So first function we will learn, that is str1.char add, and it is expecting some index. So here I will tell you, whenever you make str dot, you will see all these functions and your properties. तो इसमें आपको कैसे पता करना है, कैसे आपको what is the way of displaying the you can say information. तो यहाँ पे caret, what is the name of function? Caret, and whatever written in bracket, that is the parameter. Getting my point? जो caret है वो function का नाम है, और bracket में क्या लिखा है? It is expecting a parameter and the type of parameter is int. Is it okay? Yes. The definition को समझ, it is very important to understand this definition. And in the syntax you will say colon. After colon it write the written type of the function. तो colon के बाद क्या लिखा है? char, char. It means when you call this function, it will return the character. Okay, and after that there is a hyphen, and after hyphen it shows you, Eclipse shows you the name of the class in which this function exists. तो आपका function जो है, function का नाम है caret, and it expecting a parameter index, and the type of parameter is integer, and this function returns a character, and who is the owner of this function or in which class this function exists, that is string. Getting my point? तो definition clear है कि colon के बाद return type होता है and hyphen के बाद the name of the class which contains this function. Is it okay? Sir, what is the AT Yes. after the char? Sorry? What is the AT after the char in the index? No, actually your voice is not clear. Let me yeah, hello. Sir, actually after char there is AT, right? What is that meaning, sir? Moment, give me some time. Yeah, now tell me.
Sir, after the char, there is AT, right? Char is actually you can say it is Yeah, actually before that, sir. Sir, before that, char at you are right saying na at means Yes. what? She's asking, Ah. I think. Oh, this is the whole function name actually. Okay, caret. They have given the function name caret. Function का नाम इन्होंने caret रखा है क्योंकि इसका मतलब क्या है? What is the use of this function? I told you that a string is a sequence of characters. Okay, so if you want to get a character which is available on a particular index, you can get it with the help of this function. तो caret function में अगर आप कोई index पास करोगे तो ये उस index पे जो कैरेक्टर है उसको क्या करेगा? आपको रिटर्न कर देगा. So if you take the example in str1 dot, if I will say 1, so what character it will return? E. है ना? So I'm writing a you can say data type char and just giving a variable name my char. Are you getting my point? Yes. तो ये क्या करेगा? कैरेट फंक्शन का नाम लिखा है. तो मैंने आपको बोला कैरेट फंक्शन का नाम है पूरा. एंड हाउ वी आइडेंटिफाई, मैंने आपको बताया whenever you click or whenever you try to check the reference or object of a you can say class, आपको यहाँ पे दो ही चीजें दिखाई देंगी, या तो फंक्शन होगा प्रॉपर्टी. कोई क्लास में क्या होता है? दो ही चीज होती है. हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ फंक्शन? हमेशा उसके आगे क्या लगा होगा? ब्रैकेट. सो कैरेट इज ए फंक्शन. Now it is expecting an index. Index means it is expecting a parameter. और उसका टाइप क्या है? Just before it int. तो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है. ये रिटर्न क्या करेगा? व्हाट इज द रिटर्न टाइप? ये रिटर्न करता है char कैरेक्टर. एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा. ठीक है. तो when I will run this function, I will try to print this my character. मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ. I am putting it my char जो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया है. So it should print e. Yes or no? ठीक है. तो इसने क्या प्रिंट किया? E. So it means what? So it means what is the use of this function? If you want to get the character on your string at a particular position, you can get it. ठीक है? Okay, Sukesh, Yes. okay. So now the thing is that now tell me one thing. If I will put the index here, I will put the index equal to suppose 2. So what will be the output? A. Yeah. Very good. Excellent. A. Okay, so now you will see if I will put the here instead of here, I'm not changing the index, I'm just changing the string. I'm calling this caret function on string 1. If I call this function on string 2, what will be the output? अगर मैं इस function को किस पे? Very good. तो हम जिस ऑब्जेक्ट पे इसको कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी क्या करेगा? पोजीशन रिटर्न करेगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ठीक है. Yes, sir. नाउ यू सर विल अगर सी. इसका मतलब 2 से ज्यादा दिया तो कुछ एक्सेप्शन देगा क्या ये? बिल्कुल देगा. यू विल सी. अगर मैंने एग्जांपल लिया 4 का, तो देखो 4 पे व्हाट इज हैपनिंग हियर एट कंपाइल टाइम. देखो अभी हम वी विल लर्न अ टॉपिक आफ्टर इट दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शन क्या होती है तमाम मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ इन सम प्लेसेस व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर राइटिंग और कंपाइलिंग द प्रोग्राम, इट विल नॉट गिव यू एनी एरर. जैसे यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं दे रहा. आप क्या लिख रहे हो? कैरेट फॉर. ठीक है. चूंकि ये स्ट्रिंग आपने बनाई है, बट यू नो दैट देयर इज नो कैरेक्टर एट पोजीशन 4, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पोजीशन क्या है? 2 है ना इंडेक्सिंग. तो ये आपको एक एक्सेप्शन देगा रन टाइम पे. व्हाट इज एक्सेप्शन? यू विल से ये देखो, ये बोलेगा क्या? इस स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. ठीक है. Range. हाँ, तो ये आपको देगा. ये सब हम हैंडल करेंगे, हम ये देखेंगे. वी विल लर्न दैट हाउ व्हेन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल विद दैट. ठीक है. तो हमें, क्योंकि इट इज द यू कैन से इट इज द यू कैन से rule of the Java that whenever you are running a program, it should not throw any exception. अगर आपको exception आ रही है, it is not a good thing. You have to handle it by some means. ठीक है. ओके. Yes. तो हमने तो ऐसे ही हमको we have to learn every most of the function which is available in the string class. So we learn this function. Now come to second one, str1 dot. So now caret we have learned. Opposite to caret there is a function that is called index. अब आपको पता है इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या होगा? इट विल जस्ट द अपोजिट ऑफ द कैरेट. मतलब आपने क्या होगा? इंडेक्स ऑफ फंक्शन यू विल टॉक अबाउट द सेकंड वन. इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है आप उसे कैरेक्टर दो, ये उसको क्या रिटर्न करेगा? आपका इंडेक्स अपोजिट. गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर एग्जांपल आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इंडेक्स ऑफ एंड हियर आई एम पासिंग यू कैन से हियर आई एम पासिंग str1 में पास करते हैं e. तो मैंने क्या दिया? I have given a input that index of E. I want to get the indexing number of E alphabet, E character in str1. So you will see इसका return type क्या है? अगर इसकी definition देखो, definition क्या है index of का? It is taking a parameter like string
Okay, string and the return type is int and the owner of this function is string class. तो ये int return करेगा. चलो int में store करते हैं int and I'm giving the variable name index, my index. तो अब इसको print करते हैं. So what it will give, just see here. क्या आंसर आएगा? What will be the answer of this? 1. 1. ठीक है. सो आप दो फंक्शन, these two functions are very very important. ये दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं and very very used in your logical programming. तो पहला फंक्शन क्या है? string dot char means it is expecting an integer parameter which is just expecting as an index and it will return the character at that particular index. Second function is opposite of this, that is called index of. So it takes the parameter as a character, or you can say it takes the parameter as a string and return its index. Getting my point? तो ये दो फंक्शन होते हैं, that is very very important. Anybody have any doubt? किसी को कोई डाउट हो साथ में बताते चलना. Getting my point? सर string one dot index of, आपने वो string वाला फंक्शन यूज किया ना? हाँ जी, मैंने स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज किया है क्योंकि इसके तीन आते हैं, आपके फ्लेवर आते हैं. अभी मैंने आपको और नहीं बताया क्योंकि रीजन ये है कि इसमें आपके क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट यू कैन टू सी इट, यू कैन सी हियर. यहाँ पे तीन फंक्शन आते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो उसके अलग अलग पर्पस है. तो एक एक करके मैं आपको तीनों बता भी रहा हूँ. बताओ. ठीक है सर. हाँ जी सर जी. सर ये पूछ रहे थे, ये जो आपने स्ट्रिंग क्लास का ये बनाया str1, तो सर इसको जैसे ये क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, तो इसको str1 को इसका वेरिएबल बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे? हाँ, very good question. Now the thing is that whenever you are declaring this thing, it totally depends on the place of declaring. अगर आपने देखो इसको कहाँ बनाया है, इस फंक्शन के अंदर, तो जब भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, we call it local variable, है ना, ये मैंने बताया था. और अगर इसी को मैं डिफाइन करता एट द क्लास लेवल, अगर मैं प्रैक्टिस क्लास के डायरेक्ट अंदर जाके इफ आई डिक्लेयर द सेम वेरिएबल एट द क्लास लेवल, तो इसको क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया क्लास की प्रॉपर्टी. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी इट इज आल्सो अ वेरिएबल. इट इज अ वेरिएबल at a class level. When a variable is declared as a class level, it is known as property. And when any variable is declared within a function, class के अंदर define होता है, but also within a function, then it is called local. ठीक है? Local variable. Yes. अब मैंने इसके बाद ये भी बताया था, when you are declaring a property or when you are declaring a property at a class level, तो इसमें भी दो variant होते हैं. If you are declaring without the static keyword, this is known as इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. और अगर मैं इसमें स्टैटिक लगा दूं तो बन जाएगा क्लास प्रॉपर्टी, है ना. आई हैव डिफाइंड दिस थिंग इन द प्रीवियस सेशंस. Yes. ठीक है. ओके, सो नाउ लेट मी कम बैक. बट दिस इज गुड थिंग, व्हेनेवर यू हैव अ डाउट, प्लीज पुट योर डाउट इन फ्रंट ऑफ मी. दैट इज द गुड, यू कैन से, वे टू क्लियर योर डाउट्स. चलिए यहाँ पे आते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि इंडेक्स ऑफ के और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. आई विल शो यू. इंडेक्स ऑफ. सो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव लर्न इंडेक्स इंट. यहाँ पे इंट जो होता है, यहाँ पे इंट का मतलब ये है कि फिर पास योर एनी कैरेक्टर, ये आप उसको ले लेगा. स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग. वी यूजली यूज दिस फंक्शन, सेकंड फंक्शन इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का यूज क्यों करते हैं? वी कैन फाइंड द इंडेक्सिंग ऑफ ए कैरेक्टर आल्सो एंड वी कैन फाइंड द इंडेक्सिंग ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रिंग आल्सो. अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है? कैरेक्टर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल अल्फाबेट एंड स्ट्रिंग मींस when we are talking about a sequence of character. तो देखो आपको बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ. Here in the string one I am writing Pradeep Chand Nalwal. This is also a string. Yes or no? Yes. तो देखो आप अगर कभी इसकी इंडेक्स निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू टेक द इंडेक्स ऑफ A, मुझे A की निकालनी है. सो यू कैन पुट इट A, डबल कोट्स में लिख दो A. सो व्हाट इट विल रिटर्न? ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न 2. वेरी गुड. देखो आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा. लेट मी रन. ठीक है. नाउ द थिंग इज यू कैन सी इजिली, यू कैन सी हियर कि इन दिस स्ट्रिंग A is not coming only once. A यहाँ पे भी आ रहा है, then A is coming here and then A is coming here also. Yes or no? Yes. So Yes. by default, whenever you are calling this function is string one dot index of A, तो ये it always return the first occurrence of the character. Getting my point? Okay. Okay. Now you will see there is another flavor of this function that is called second one, index of int char. आप जो दो फंक्शन है जो they are important, you can focus on index of string or index of second one, index string
index of a string comma int from index. तो सेकंड इज वन वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग टू, वहां पे दो चीज बता रहे हो आप, एक तो आप बता रहे हो कौन सा करेक्टर आपको फाइंड करना है, दिस वन, एंड ऑल्सो यू आर पासिंग सेकंड थिंग फ्रॉम विच इंडेक्स यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इट 3, मैंने क्या लिखा 3, तो ये क्या करेगा, इट विल सर्च द कैरेक्टर ए in the str1 string, but starting it will start searching from index 3. तो 3 से इंडेक्स जब स्टार्ट करेगा तो उसे 3 के बाद जो पहला मिलेगा, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द ए आफ्टर इंडेक्स 3, इट विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखो दिस टाइम इट इज गिविंग 10। अब आप देखो यहाँ पे अगर 10 क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, आपने बोला उसे 3 से स्टार्ट करो, तो देखो यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, वो कहां से स्टार्ट करेगा, ये 0 हो गया, 1 2 और 3, यानी वो डी के बाद स्टार्ट करेगा, डी से स्टार्ट करेगा शुरू करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डी के बाद उसे, तो डी के बाद उसे पहला ए कहां मिलेगा, ए, ठीक है, तो अब ए पे मिलेगा, बट द हियर द थिंग इज दैट ए का पोजीशन वो निकालेगा, वो तो कहां से निकालेगा, इंडेक्स जो निकालेगा वो तो कहां से मानेगा, 0 से स्टार्ट करेगा ना, स्टार्ट सर्चिंग, इट इज स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द डी, लेकिन पोजीशन तो उसकी कहां से मानी जाएगी, इसे की स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Getting my point? Are you getting my point? Yes or no? Yes. ठीक है, so here you can get the index of a character also. Now you can get the index of a word also. अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। If you talk about the index of this चंद, मुझे पूरे चंद का वर्ड का इंडेक्स चाहिए, मतलब when I am talking about the index means I want to get the position of that character or word। तो आप ये बताओ इस वर्ड का जो कैरेक्टर का जो माना जाएगा, it will consider the C, yes or no? जहां से चंद स्टार्ट हो रहा है उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा, so it will give the same result when it will start searching where CHAND whole string is starting। तो whole string कहां से स्टार्ट हो रही है, C से, तो इसकी पोजीशन कहां मानी जाएगी, C से, तो इसका देखो आंसर क्या होगा, what you will get the result here 8। Getting my point? तो अगर मैं यहाँ पे C का इंडेक्स पूछता या चंद का पूछता, तो दोनों का सेम क्यों माना जाएगा, चंद वर्ड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चंद वर्ड, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन तो उसकी स्ट्रिंग इंडेक्स मानी जाएगी, यस और नो? Yes. Yes. तो दिस थिंग इज वेरी वेरी यूज्ड इन इंटरव्यू। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े इसमें क्या करने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े इसमें यू हैव टू वर्क ऑन योर लॉजिकल पार्ट। फॉर एग्जांपल आई विल से यू दैट इंटरव्यू कैन आस्क यू दिस थिंग आल्सो। आपके पास एक वर्ड है, ही विल से द वर्ड इज एक्चुअली, यू कैन से द वर्ड इज रिटन इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। चलो मैं 2 का एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास फर्स्ट और लास्ट नेम है, so anybody can tell me, मुझे I have to write a simple program to get the last name from this string। मुझे इसमें जो भी नाम लिखा उसमें से लास्ट नेम चाहिए। Can anybody tell me how you can return the last name? हाँ, लास्ट नेम कैसे निकलेगा, लास्ट नेम आपको पता है कैसे निकलेगा, इस इंडेक्स के बाद जितना भी लिखा हुआ है दैट इज द लास्ट नेम, यस और नो? So ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम दे कैन आस्क यू, यू कैन नॉट राइट इट राइट नाउ, रीजन इज दैट अभी मैंने वो फंक्शन आपको बताया नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये पता लिया कि अगर मुझे लास्ट नेम निकालना है, सो आई हैव टू स्प्लिट द वर्ड आफ्टर दिस स्पेस। इस स्पेस के बाद अगर मैं इस इंडेक्स निकालने के बाद अगर मैं सारे कैरेक्टर निकाल लूं, सो दैट विल गिव मी द लास्ट नेम। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम यू कैन गेट इट। चलिए पहले कंप्लीट करते हैं, देन यू कम टू दिस पॉइंट str1। तो आपने ये लर्न किया, नाउ आई विल शो यू, I'm talking about only the important function। इसके बाद the important function is concat। Concat क्या होता है? Anybody know? What do you mean by concat? Like we need to concatenate 2 names, like first name और last name को दो एक साथ डिस्प्ले करना होता है। That time we use the concatenation। Yes, concat, you can say concat means it is something like the appending also, है ना? We call it append also। For example, I can give the example। यहाँ पे एक str1 है, ठीक है? तो str1 में मैंने लिख दिया, you can take the example, मैंने यहाँ पे केवल प्रदीप लिखा, and str2 में I'm writing my last name। तो मुझे क्या करना है, I want to concatenate str1 with str2। मतलब मुझे str1 में str2 को concat करके combine कर देना है, something like the suffix, ठीक है? तो मुझे नाम क्या प्रिंट करना है, मुझे पूरा नाम चाहिए, प्रदीप Nalwal। So we can call a function str1 dot concat and here we pass the parameter str2 जिसको concat करना है।
So now whole thing is that when it will concat, what it will return, ये क्या return करेगी, string return करेगी after combining both the things. तो इसको जो उसका return type है that is called string. और ये आपको कैसे सीखने को मिलेगा, every time I'm saying that focus on the function definition. मैंने यहाँ पे concat लिखा है, ध्यान से देखना concat का return type क्या होता है, ये सब आपको जानना, that is very very important. Oh sorry, यहाँ पे right final. Now you'll see I'm writing str dot. तो यहाँ पे when I'm calling concat, concat का what is the parameter it is taking, str. यानी concat एक दूसरा parameter as a parameter लेता है. What is the return type of this function, string. और ये किस क्लास का फंक्शन है, वो भी string क्लास. Getting my point, yes or no? Yes. तो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होता ना कि यहाँ पे ये कैसे दे रखा है कि स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है और स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग इज क्लास आल्सो एंड इट स्ट्रिंग इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए डेटा टाइप. तो ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है जिसमें स्ट्रिंग पैरामीटर इट इज टेकिंग, इट इज रिटर्निंग स्ट्रिंग एंड इट इज आल्सो ओनर ऑफ दिस फंक्शन इज स्ट्रिंग. तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, आई हैव रिटन str2. सो व्हेन आई सेव इट इन अ फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल, लेट मी प्रिंट. तो क्या प्रिंट करेगा ये, प्रदीप नैनवाल. यस इट विल प्रिंट प्रदीप नैनवाल. ठीक है. अब होता क्या है, यूजली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो हम यूजली इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि वी हैव ए स्पेशल यू कैन से स्पेशल वे टू अचीव इट. कैसे, हम बहुत आसानी से करते हैं कि हम क्या करते हैं, str1 लिख दो, है ना, str1 कर दो और प्लस कर दो str2. सो प्लस इज आल्सो यूज्ड फॉर कॉन्केटिनेशन. तो हमको ये बड़ा इजीएस्ट वे लगता है, एंड यूजली यू परफॉर्म दिस. इसका एक बेनिफिट भी बताते हैं. The benefit is that because it is very easy to use, तो हमको देखो क्या करना है, if I want to make a space between these two string, तो देखो मुझे क्या करना है, कॉन्केट में तो बड़ा गड़बड़ करना पड़ेगा. कॉन्केट कैसे करना पड़ेगा, कॉन्केट करते तो देखो इट वाज लिटिल बिट यू कैन से लेंथी. str1 डॉट हम करते कॉन्केट, फर्स्ट में करता कॉन्केट, और कॉन्केट क्या करता, एक स्पेस. गेटिंग माय पॉइंट. और स्पेस करने के बाद देन आई से कॉन्केट, और अब कॉन्केट इस पे फिर से कॉन्केट कॉल करता और मैं लिखता str2. तो देखो ये कितना लेंथी मुझे लिखना पड़ा. अगर मुझे इफ वी वांट टू अचीव द सेम थिंग, हाउ इजी इट इज, कितना आसान था, क्या बताऊं. सिंपल आपको करना है क्या, प्लस प्लस ऐड करते जाओ, str1 प्लस स्पेस प्लस str. सो दैट फंक्शन इज अवेलेबल इन द स्ट्रिंग क्लास, बट you can say 99.9% we use this plus one. और इसको this is known as प्लस, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब प्लस का एक्चुअली पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस, टू मेक अ अरिथमेटिक ऑपरेशन. यस और नो, आप दो नंबर को प्लस करते हो, तो यहाँ पे इसको एक इट इज आल्सो डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मींस जब भी आपको प्लस का यूज आप कर रहे हो, सो इट ऑलवेज ट्राई टू चेक द लेफ्ट एंड राइट साइड. अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों अगर स्ट्रिंग होते हैं, so this plus is going to work as a concatenation, and left and right side, if both are numeric, it is going to perform a arithmetic operation. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. चलिए आपको मैं दिखाता भी हूं. अगर मैं यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिक लिखता 5 और यहाँ लिखता 3, तो इसका आंसर 53 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, 8, है ना. लेकिन इफ आई विल परफॉर्म टू स्ट्रिंग, देखो 5 को मैं स्ट्रिंग की तरह लिख रहा हूं, इन द डबल कोट्स आई एम राइटिंग 5, नाउ इट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग. यस और नो. अगर मैं 5 को डबल कोट्स में लिख दूं तो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग. हाँ जी, यस और नो. Yes, sir. अब देखो व्हाट इज द आंसर नाउ यू आर गेटिंग 8 और 53. You are getting the answer 8 or 53. 3. Yeah. So why you are getting 53? So it is the rule कि जब भी whenever you are performing a plus operation. Actually, 5 is a string, sir. Sorry, I'm not. Sir. I'm confusing. 5 is a string, right? Yes. Reason is that देखो अगर आप केवल 5 को ऐसे लिखोगे without double quotes, so it is treated as a numeric, है ना. और जब अगर किसी भी चीज को डबल कोट्स के अंदर लिख देते हो, then it is treated as a string. Okay. ठीक है. तो अब देखो जैसे मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो अब ये 5 एक स्ट्रिंग है एंड 3 इज अ न्यूमेरिक. मैंने बोला कि अगर दोनों तरफ बोथ द साइडेड ऑफ द प्लस आर अ न्यूमेरिक वैल्यू, अगर दोनों न्यूमेरिक होंगी, सो दिस प्लस इज गोइंग टू वर्क एज ए अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये एडिशन कर देगा. लेकिन अगर एक साइड यू आर गेटिंग द स्ट्रिंग एंड अनदर साइड यू आर गेटिंग द न्यूमेरिक, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, कॉन्केटिनेशन. ठीक है. अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 5 लिख देता
और यहाँ पे लिख देता है इसको 3 डबल कोट्स में, तो भी क्या करता, इट मेक्स ए कॉन्केट। सो यू गॉट द रूल एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर मतलब प्लस का जो ऑपरेटर है वो अपने हिसाब से काम करता है, चेक करता है व्हाट इज द लेफ्ट साइड एंड व्हाट इज द राइट साइड। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल, अगर इसके बारे में बहुत डिटेल देखना है क्योंकि देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन। देखो एक और चीज दिखाता हूं, आई एम राइटिंग 5 + 2 + 3। अब देखो मैं बताऊं, दिस क्वेश्चन इज आज इन द इंटरव्यू, और मैं बताऊं आप में से बहुत लोग ना इसको गलती बताओगे। चलिए मैं आपको चला के दिखा देता हूं। आंसर क्या आया? 73। सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। अगर मैं इसी 2 को यहां पे ना रख के, इफ आई विल कट दिस 2 फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर, देखो आंसर क्या आएगा? 532। ठीक है। सो लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर, बहुत से कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं जहां पे ये ऐसे होता है। सो आई विल एडवाइज यू, यू कैन सी सो मेनी कॉम्बिनेशन एंड देयर इज अ वीडियो in the, you can say that is called system.out.print, और बहुत इंटरेस्टिंग है and various questions comes from this। आपको दिखाता हूं, if you'll see इसमें लिखा हुआ this one, are you able to see this one, understanding system.out.println। तो इसमें you can think about whatever combinations are there। इसमें कई रूल भी होते हैं, इसके कुछ रूल हैं कि जो मैंने आपको बताया, ये तो बहुत कम कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। सो आई विल एडवाइज प्लीज वॉच दिस वीडियो। सो आई एम पुटिंग कॉपी लिंक एड्रेस, सो आई एम पुटिंग इन योर व्हाट्सएप। तो मैं आपके व्हाट्सएप में दे रहा हूँ, आप इसको एक बार जरूर देखें। सर या टेल मी। सर आपने जब 5 + 3 किया तो 53 आया, फिर 5 + 3 प्लस इन्वर्टेड कॉमे में 2 डाला तो 573 क्यों हो गया? मतलब 5 + 3 = 53, क्योंकि वो कॉन्केनेट कर रहा है ना? यस, रीजन इज दैट। देखो एक्चुअली हियर आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमें लगता है कि रियल वर्ल्ड में जो कैलकुलेटर होता है, आपको पता है कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है? व्हेन यू ट्राई टू राइट मल्टीपल, आप लिखते हो 5 + 3 + 2 + 7 और यू राइट 5 + 3 × 2 डिवाइड बाय समथिंग लाइक दैट, तो पता है ऑलवेज कैलकुलेशन इज हैपेंड बिटवीन टू ऑपरेटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैलकुलेशन हमें हमेशा 2 के बीच होती है, पता है? आप उसमें एक नंबर सा एक्सप्रेशन लिख देते हो, बट ऑलवेज द कैलकुलेशन हैपेंस बिटवीन 2 थिंग्स। जब वो 2 चीजें कंबाइन होकर एक रिजल्ट बन जाता है, देन इट वर्क्स विद द थर्ड वन। गेटिंग माय पॉइंट? सर तो इससे पहले जो आपने लिखा था तो 5 + 3 लिखा तो 53 प्रिंट हुआ। हाँ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, कॉन्कनेट मतलब प्लस ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे, ये कॉन्कनेट कर रहा है दोनों को, मतलब हाँ, नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है और कॉन्कनेट करके रिजल्ट 53 दे रहा है, करेक्ट ठीक है। है तो ना? अब अब यहाँ पे देखो सेकंड मैं, टाइम आपने, हाँ अब हाँ देखो मैं इसके बता रहा हूँ। पहले आपने क्या एग्जांपल दिया था, 5 + 2 प्लस इन्वर्टेड कॉमा 3, तो हाँ वो तो अब देख, 73 क्यों हो गया? हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैंने कहा, देखो वही बता रहा हूँ कि हमको ये बहुत कॉमन सी चीज है एंड एवरीबडी शुड नो, और आपको अपने बच्चों को भी ये बताना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऑपरेशन होता है, आपको 3 दिख रहा है, लेकिन हमेशा ऑपरेशन किसके बीच होते हैं? 2 के बीच। तो इसको डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई वी यूज अ रूल दैट इज कॉल्ड बॉड मास। आपको बॉड मास का रूल पता है ना? बॉड मास का एक रूल होते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, है ना? ये पूरा एक मतलब रूल है। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर यस, वो उसको लेता जाता है। हाँ, और उसके बाद फॉलो होता है आपका, इसमें जो सीक्वेंस होता है, ऑलवेज कैलकुलेशन परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट। तो आप बताओ, सबसे पहले इसको 2 कैलकुलेशन मिली, एक मिला 5 और एक मिला 2। अभी इसको कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। सो नाउ व्हेन इट विल मेक 5 + 2, दोनों क्या है? बोथ आर न्यूमेरिक। तो क्या बन जाएगा कंबाइंड होके? 7। यस और नो? यस। अब ये रिजल्ट बना 7, और 7 के साथ अब कैलकुलेशन होनी है +3 की। एक 7 है और एक 3 का स्ट्रिंग है, व्हाट विल बिकम? सर 73 से सर, पर इससे पहले जब 5 + 2 लिखा था तो 5 + 2 7 क्यों नहीं हुआ? फिर 5 + 3 लिखा था आपने। 5 + 3 कहाँ? आप बताओ मुझे कैसे लिखूं? मैंने 5 प्लस लिखा, अगर 3 लिखोगे लेकिन विदाउट इसके लिखो ना। देखो आपको 5 + 3 लिखा हूं, देखो आंसर क्या आएगा, आप मुझे बताओ। इट इज गिविंग 8। क्यों? देखो मैं आपको ध्यान से समझना, कैलकुलेशन लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और इट ऑलवेज परफॉर्म 2 थिंग्स एट ए टाइम। ये +5 + 3 करेगा। अब इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, देखो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। देखो आप टेक द एग्जांपल, यू कैन राइट ए न्यूमेरिक आल्सो, और इसके बाद मैं क्या करता हूं यहाँ पे, इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या, लेट मी राइट 2। अब देखो इसकी कैलकुलेशन आप मुझे बताना क्या हो रही है, क्या हुआ? 5 + 3 पहले 2 को उसने किया, फिर हाँ, उसके और बाद लेफ्ट से स्टार्ट +7 किया, इट विल बिकम 8। अब देखो 8 के बाद अगला क्या मिला, 8 + 7, इट विल बिकम 15।
और 15 के साथ चूंकि दिस टाइम द 2 वाज स्ट्रिंग, सो इट मेक ए कॉन्केटिनेशन। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है। इसमें एक कॉम्बिनेशन आता है व्हेन यू आर यूजिंग माइनस। तो माइनस को यूज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि माइनस का हर जगह यूज नहीं कर सकते। जस्ट सी इफ आई एम यूजिंग हियर माइनस, क्या देना शुरू कर दी इसने? क्योंकि 15 माइनस स्ट्रिंग कुछ होता ही नहीं है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, आई हैव गिवन इट एग्जांपल बट सो मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, सो आई एडवाइज जस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने आपको दिया है जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एंड व्हाट इज द रूल, यू विल लर्न इट एंड देन यू हैव ए क्वेश्चन यू कैन कम टू। ठीक है, तो बहुत कॉम्बिनेशन है जो आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो नाउ लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। So I was saying here कि यहाँ पे हमने क्या करना चाहिए, we should use the plus operator for concatenation, but yeah, you should know about the function which is available on string class में जो function है वो आपको पता होना चाहिए, that's why I told you about it. Okay, now what is the next function? str1 dot. So now we have learned about the concat, now we are going to learn about contains. Contains क्या होता है? That is also very very important function. Anybody can tell me contains and it is expecting some string parameter. कोई बताएगा? str2 when String contains that particular character. means that- find out the a is there in the string, then yeah, so same thing you can say when I'm talking about str1 contains str2, it means in the first string you want to check the sequence of another second string. For take the example, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं DEEP, तो ये चेक करेगा फर्स्ट स्ट्रिंग कंटेन्स दिस सीक्वेंस और नॉट, मतलब पहली स्ट्रिंग के अंदर क्या ये एज ए सब स्ट्रिंग मिल रहा है कि नहीं। सब स्ट्रिंग मतलब दिस इज एज ए पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो आप बताओ इसके अंदर DEEP मिल रहा है कहीं पूरा? Yes. So it will, what is the return type of this function? Contains function का return String. type क्या है? Boolean. String. Boolean. ना Boolean, you will see the return type is Boolean. ठीक है, true चलो false. हाँ, you can say, फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। We should not make a confusion at initial stage. तो देखो contains का return type क्या है? Contains and this character sequence is also known as a string. आप string class use कर लो या char sequence, दोनों का मतलब सिंपल क्या होता है? सेम ही होता है, because I told you string is also a sequence of character. तो उन्होंने दो क्लास बनाई, एक string और एक char sequence. So what is the return type of this function? क्या है? Boolean. और Boolean डेटा टाइप मैंने आपको बताया क्या था? Boolean क्या होता है? Boolean मतलब ट्रू और false. तो इसका मतलब when I call this function, what is the purpose of this function? To tell me the answer that whether the first string contains the second one or not. अगर ये contain करती होगी तो answer will be true, otherwise the answer will be false. Getting my point? Yes. So now tell me in this case what will be the answer? अरे बताओ True. मैं पहले True. True. Yes. ठीक है, और आप देख लो इफ आई विल राइट समथिंग लाइक दैट, अगर मैं इसमें लिख देता फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग वाज समथिंग नॉट डीप, आई विल से फॉर एग्जांपल जीप, सो नाउ द आंसर विल बी फॉल्स। तो ये क्या मैच करता है? इट मैच द कंप्लीट स्ट्रिंग। इससे ये पूरा सीक्वेंस मिलना चाहिए। आप ये मत सोचना कि ढूंढेगा अरे EEP मिल गया, नहीं, द होल सेकंड स्ट्रिंग शुड कंटेन्स इन द फर्स्ट वन। गेटिंग माय पॉइंट? Getting my point? Yes or no? Yes. Sir, can you please Yes, repeat once yes. again? हाँ जी. So I'm saying here that it checks whether second string is a part of first string or not. मतलब second string जो है, क्या वो पहली string के अंदर ऐसा कोई पैटर्न मैच हो रहा है जहाँ पे पूरी string देखिए सेकंड वाली ये मैच हो रहा है? टेल मी। तो आंसर विल बी फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इफ आई एम पुटिंग इट डीप, तो आप देखो क्या मैच कर रही है? क्या पहली स्ट्रिंग में कहीं कोई ऐसी स्ट्रिंग मैच कर रही है पूरा सीक्वेंस? यस, यहाँ पे देखो। Sir, actually, I have another doubt. Yeah. Actually, you are telling it's match, it will print true or false. But what about this print statement, sir? You are writing something RES. No. Why should not print this So thing? yeah. So what I'm doing here, RES means what is happening here when I'm calling this function. So what is the return type of this function? The return type of this Boolean. function is a Boolean. Okay. So I'm storing in a variable. मैं result variable में इसका आंसर स्टोर कर रहा हूँ रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप आंसर क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। अगर ये कंटेन करेगा so it will return true. So that I have stored in the
res variable. So res का return जो type है data type, that is called boolean. जैसे data type होता है ना, if you want to store some numeric value, you take the data type integer, int. When you want to store some string, you take the data type string. When you want to store a single character, you take the data type char. ऐसे ही अगर आपको कोई true और false में return करता है तो उसका data type known as boolean. Got this point? Yes. Yes, Yes. sir, got it. तो ठीक है, अगर तो- स्ट्रिंग 2 में मैंने अगर डिप स्पेस ऐसा कुछ लिख के कंपेयर किया तो कुछ एरर देगा क्या? मतलब नहीं, अभी नहीं, सपोज स्ट्रिंग 1 में प्रदीप स्पेस नैनवाल दिया और स्ट्रिंग 2 प्रदीप में स्पेस नल, हाँ हाँ। बिल्कुल, हाँ अभी स्ट्रिंग 2 में मैंने दीप स्पेस NAIL ऐसे लिखा तो बिल्कुल। मैंने बोला बिकॉज द थिंग इज दैट स्पेस इज आल्सो ट्रीटेड एज ए कैरेक्टर। स्पेस को भी देखो क्या, हम आप जानते हैं कि हम आपने बोला हम इसे यूजली स्पेस बोल देते हैं, लेकिन हाँ। जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में स्पेस को भी क्या मानता है, उसके लिए वो एक कैरेक्टर है। यस और नो? ओके, ठीक है, स्पेशल और कैरेक्टर, ओके। Yes. हाँ जी, उसके लिए कैरेक्टर है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था, व्हेन यू वांट टू फेच, राइट ए प्रोग्राम टू फेच द लास्ट नेम, तो आप कैसे पैदा, आप बताओगे कि मुझे इसका इंडेक्स दो, इसका दो, इसका इंडेक्स दो, स्पेस जहां मिल रहा है, और उसके आगे से जितने भी कैरेक्टर है वो आप निकाल के रख लोगे। सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द स्पेस, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? और सर और एक क्वेश्चन है, हाँ मतलब जी। अभी इसी स्ट्रिंग में सपोज मैंने प्रदीप स्पेस सुदीप लिखा, SUDEEP। ओके, अभी स्ट्रिंग 2 में जब दीप कंपेयर करेगा वो फर्स्ट प्रदीप के साथ भी कंपेयर करेगा सुदीप के साथ, मतलब कैसे करेगा वो कंपेयर करेगा पूरे में, अगर उसे पहले से मिल गया, बिकॉज आंसर इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर देखो ऐसे हो गया ना, सिंपल सी बात, अगर उसे पहला मिल गया तो उसे आंसर हाँ। तो मिल ही गया, कंटेन करता है। आपने, आपका Okay. आंसर ये नहीं है कि वो कितनी बार करता है, योर क्वेश्चन इज दैट इट कंटेन्स और नॉट। तो अगर उसे यहाँ मिल गया तो आगे चेक ही नहीं करेगा, है ना? Correct. और अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे चेक कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? Got it. So two things are there. One question is that is contains or not, and second is how many times. How many contains. times? ठीक है, तो how many times contains के लिए क्या होगा आपका, कि how many times के लिए you have to write a custom program। ऐसे ही तो जो प्रोग्राम पूछते हैं, they ask you the program in this such a way कि भाई लिखो, एक लॉजिक लिखो, तो आप लॉजिक लिखना स्टार्ट करोगे कि कैसे करें। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया contains का। Now we'll talk about another function। I'm happy that everybody is asking the question. If you have a doubt, actually you are helping yourself and also helping others। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो कभी कभी दूसरे नहीं पूछते, लेकिन आप उनकी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो कंटेन्स वी हैव लर्न, नाउ वी विल टॉक अबाउट एंड्स विद। ठीक है, एंड्स विद सबको समझ रहा है? ट्रस्ट मी, अगेन आई रियली अप्रेज जावा। रीजन इज दैट इन्होंने जो नाम रखे हैं, दैट इज रियली मीनिंगफुल। बहुत सारी चीजें तो इनके फंक्शन के नाम से पता चलती है। एंड्स विद, व्हाट डू यू मीन बाय एंड्स विद? The string which Ending end with character of like any string. ending, yeah. Yes, you can also tell everybody। आप भी बताओ। In the ending, like whatever the character like string is there, what is the ending? What is the character which is ending with? Ending, yes। Correct. So it can be a Yes. character or it can be a sequence of character, means a string, है ना? Yes. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले, तो देखो इस सिनेरियो में दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर हम देखें str1 is ending with str2, yes, इसके एंड में दीप है और दीप है। So if you call this function, you can say ends with, तो आंसर क्या आएगा? If I'm saying ends with str2, so answer will be True. और इसका रिटर्न टाइप shown you that the return type is boolean। तो मैं Boolean. इस res वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ यहाँ पे इसके रिजल्ट के लिए, है ना? res वेरिएबल है, तो y am declaring true, so answer will be true। ठीक है, और अगर देखो, अगर मैं सुदीप में पहले में से मैं इसमें से p हटा देता, so now answer will be False. so False. it will match that the last sequence should be the same, which is str2। ठीक है, तो यहाँ पे what is the purpose of ends with, means first string is ending with the second string। अगर पहली स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से एंड हो रही है, उसका एंडिंग जो है दैट इज द सेकंड स्ट्रिंग, देन द आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो these things we have to use at our automation, in our automation we have to use this thing। अब आता है equals, and that is very very important, and that is very very important। equals तो सबको पता है, equals मतलब it is comparing whether two strings are equal or not। Equal. और इसका भी आंसर क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज बूलियन। तो देखो इसका आरएस लिखेंगे, आंसर क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा? False. फॉल्स आएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एक काम करते हैं, आई विल शो यू अ स्पेसिफिक थिंग। मैंने यहाँ लिखा प्रदीप एंड हियर आई एम राइटिंग प्रदीप, सो आंसर विल बी True. वेरी गुड। सो नाउ आई एम डूइंग वन थिंग,
I'm writing the first p into small, so answer will be false. false. ठीक है, it is very important. क्या होता है important? Whenever it is the equal methods, the only equal method when compared to string, it do not it considers the case also. ये case को भी consider करता है. यहाँ पे जो है the p is written in the capital and here p is written in the small. Okay, upper and lower case. तो ये दोनों को क्या मानता है? Different मानता है. तो यहाँ पे that's why it is giving the answer false. तो इसको करने के लिए sometimes happens that we don't want to consider the case. हमने आप कई जगह आपने देखा होगा जब हम सर्च करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है उसमें चेक बॉक्स में इग्नोर केस, मतलब हम कोई चीज फाइंड कर रहे हैं, किसी का नाम वी आर ट्राइंग टू फाइंड इन द सॉफ्टवेयर, डोंट कंसीडर द केस, डोंट टेक इट केस सेंसिटिव. तो उसके लिए अगर आपको करना है तो देयर इज अनदर फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड इक्वल इग्नोर केस. अगर आप देखो यहाँ पे सेम चीज मैं यूज करूंगा बट द नेम ऑफ द फंक्शन इज str1 dot equal ignore case. Are you able to see second flavor? Sir, actually, I have doubt. Yes. Yeah, tell me. Sir, actually, you have written two functions. One is sensitive and another one is equal. Both are stored in a single variable, res, right? That's why when we are running these functions, actually it will be, how can it will take? It will take on the first one or second one? Yes, it will take the latest one. देखो होता क्या, सिंपल सी बात, it is very simple. मैंने यहाँ पे I can give the example. अगर मैंने integer एक variable लिया, you can take the example. int a equal to 2. Is it okay? अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा SYSO, tell me what will be the value of a will be printed? क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 2. अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने इसके बाद I have not declared, so because I have declared a variable a and stored 2. अब मैं a को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, I am assigning some another value. Yes or no? आप ऐसा कर सकते हो ना? I told you, Yes. इसीलिए मैं whenever I give you the example, I always say that variable is just like a container. है ना? आपने अपने घर में किचन में एक डब्बा खरीदा, you have just put a box and you are just putting the sugar there. तो यहाँ पे देखो a क्या है? कंटेनर का नाम है and it is the data type. Data type means आप बता रहे हो कि मैं कंटेनर में क्या रखूंगा? I will put some solid things. अब आपने a में रखा sugar, after some time you can put it the salt. Yes or no? आपने नमक रखना शुरू कर दिया. So what will be the latest value you will get when you check your container? The last updated value. Yes or no? Yes. तो अब देखो मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आपने a डिक्लेयर किया था, उसमें 2 था, आपने a को जो भी किया you have used it, then you have assigned the 4. अब आप लेटेस्ट वैल्यू की क्या होगी? 4. You want to check? You can check it here. You are getting 4. तो इसी तरह मैंने क्या किया है, you have seen this, मैंने क्या किया, मुझे ना बार बार एक वेरिएबल को डिक्लेयर ना करना पड़े, मुझे पता था the return type of this function is boolean, तो जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था वो, तो आंसर आ गया. सी सेम वेरिएबल में आई एम ट्राइंग टू स्टोर माय अनदर रिजल्ट्स, तो जो पहला वाला रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Actually, if you wanted to print both, you have to store it in a different variable, right? Yes, if you want to do that, very good. If you in that case what you have to do, इसको result 1 एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा और इसको result 2 एक अलग वेरिएबल लेना. Getting my point? Yes, sir. देखो ऐसे, तो मैं बार बार मैंने सोचा कि बिकॉज आई एम ओनली फोकसिंग कि पहले एक काम करते हैं, पहले एक टॉपिक को कवर करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, तो आई थॉट कि हमको ऐसे करने से अच्छा वी कैन यूज द सेम वेरिएबल. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, चलिए. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, अगर इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अ सेपरेट. देखो मैंने आरएस अलग बना लिया है ना. नाउ यू आर गेटिंग द फॉल्स, इट मींस इट इज केस सेंसिटिव. अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई कॉल दिस फंक्शन str1 इक्वल्स इग्नोर केस str2. अगर मैं इसको आरएस में इसको स्टोर करता हूं तो आंसर विल बी True. Because what is the difference between the equal and equal ignore case function? Equal function, while comparing it, it actually consider the case of the string, and in the comparison of ignore case, it do not consider the case. That's why the function itself saying ignore. Getting my point? Yes, sir. So this is very important. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारा बहुत ज्यादा ऑटोमेशन में Selenium में यूज होता है. इवन स्ट्रिंग क्लासेस सबसे ज्यादा यूज होती है, and you will see so many things are there. ठीक है, so we have learned the equals, then we'll come to the ends. We have learned, just forget about these things. Index we have already told you. Okay, now we will talk about the last index. अच्छा, मुझे कोई बताएगा, we have a function index of, एक function था index of. What is the purpose of index of? आप जो इसमें करेक्टर देते थे, whatever character you just provide as an input, ये इसका क्या रिटर्न करता था? इंडेक्स. Yes or no? यहाँ पे it is giving you option last index of. Last index of means, देखो यहाँ पे हम फिर से करते हैं,
आई एम यूजिंग दिस वेरिएबल, ये ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, तो मैंने माई इंडेक्स इक्वल टू कर दिया, एंड हियर आई एम गिविंग द यू कैन से इंडेक्स ऑफ ई। देखो मैं ई का इंडेक्स देता हूँ। अब मेरे प्रदीप में क्या करेगा, इट विल ट्राई टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ ई, एंड हाउ मेनी ई आर इन प्रदीप, कितने प्रदीप में ई है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि ये माई इंडेक्स को जो देता है, व्हाट इज द आंसर, लास्ट इंडेक्स, मतलब ई का जो लास्ट आपके पूरे स्ट्रिंग में, द प्लेस विच इज कमिंग एट लास्ट ई, इट विल गिव द पोजीशन ऑफ दैट। गेटिंग माय पॉइंट, ये पहले से कंसीडर नहीं करेगा, ये कंसीडर कहां से शुरू करेगा, लास्ट से, जो लास्ट से पहला आ रहा होगा। सो नाउ द आंसर इज फर्स्ट। आपका लास्ट से ई कौन सा आ रहा होगा, ये वाला ई, यस और नो, Yes, sir. सो नाउ टेल मी, इट इज ट्राई टू फाइंड द इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट, तो ये लास्ट से शुरू करता है, लेकिन पोजीशन मैंने बोला हमेशा पोजीशन कहां से मानी जाती है, स्टार्टिंग से। तो इसने इसने ढूंढना शुरू किया, इसे कहां मिला, पहला ई लास्ट से ये, लेकिन इसकी पोजीशन क्या बताएगा वो, 0 1 2 3 4 5। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर ये सिंपल इंडेक्स ऑफ होता, सो व्हाट वाज द आंसर, 4, यस और नो, Yes, sir. Yes. ठीक है। देखो मैं आपके सामने दोनों चीज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अगर वी कॉल इट, यहाँ पे मैं इसकी जगह यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, आपके लिए दोनों काम कर लेते हैं, वी कैन डू इट एट द सेम प्लेस। यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऑफ किया ई करते, ठीक है, ये देखो। सो हियर आई विल प्रिंट दिस 2 टाइम्स, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ आफ्टर इट, एंड यू विल गेट द आंसर। तो वेन एवर यू गेट द आंसर, दिस वन, दिस विल प्रिंट द output of index of, and it will print the output of last index of, and you will see the difference. So it will give the answer 4 and 5. Getting my point? तो 5 वाला जो लास्ट इंडेक्स होता है, उसका मतलब ये मत सोचना कि ये लास्ट से इंडेक्सिंग काउंट करता है। आप लोग ये सोचो कि ये 0 और ये 1, नहीं, इंडेक्स तो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, 0 से मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, लेकिन उसकी पोजीशन जो है, जो ये चेक करना शुरू करेगा, किसको कंसीडर करेगा, दैट इज फ्रॉम द लास्ट, इसलिए क्या बोलेंगे, लास्ट इंडेक्स। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई, स्टिल आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव ए डाउट यू कैन पिंग मी राइट नाउ, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता बताने में, आई ऑलवेज लर्न। आप सबको, फॉर अगर सबको समझ में आएगा, इफ एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, देन इट इज गुड फॉर मी, है ना। इफ सिंगल पर्सन इज, यू कैन से कंफ्यूज, इट इज नॉट गुड फॉर मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो डोंट थिंक अबाउट अदर्स, आपको नहीं आता आप पूछो, आई एम ऑलवेज देयर। अगर मैं कभी भी बोलता हूँ कि आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, आप कहना प्रदीप आप तो मोटिवेट करते हो, फिर आप बोलते हो पूछो नहीं, ठीक है। सो आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इज इट ओके, शुड आई प्रोसीड? Yes. Yes. चलिए Yes, गुड। sir. और ऐसे यस नो बोलते रहा करो, अच्छा लगता है मुझे। आई फील दैट यू आर नॉट स्लीपिंग। ओके, सो आई विल से लास्ट इंडेक्स ऑफ, एंड इट दिस टाइम आल्सो आई एम टेकिंग द फ्लेवर ऑफ फ्रॉम इंडेक्स। गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहाँ पे बहुत अच्छा हैक है, लास्ट इंडेक्स यू आर कॉलिंग, बट सेम टाइम यू आर गिविंग द इंडेक्स, कहां से आपको स्टार्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. तो देखो इसका भी देखो कितना अच्छा है, आई विल गिव यू द प्रूफ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले कुछ इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं, डोंट टेक द एग्जांपल, यू कैन से दिस वन, जहाँ पे कुछ वेरिएंट मिले हमें। इसमें करते हैं प्रदीप एंड वी राइट CHAND। अब इसमें ए ढूंढते हैं, दैट विल बी गुड, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, आई हैव रिटन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, मैं ए की इंडेक्स को ढूंढता हूँ, एंड दिस टाइम आई एम गिविंग द इंडेक्स का नंबर। कहां से इंडेक्स स्टार्ट करनी है, जस्ट सी है। हम इंडेक्स स्टार्ट करते हैं कहां से, देखो हम इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 0. सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, दोनों वेरिएंट देखने के लिए विल इंडेक्स यहाँ पे देखो कहते हैं 0 1 और 2 एंड देन कैन 3, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, सो नाउ यू सी द आंसर, क्या आंसर आता है देखते हैं। ऊपर वाले को जस्ट डोंट यूज इट सो दैट वी कैन गेट ओनली वन SOP एंड वी विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, है ना। You will see what will be the answer. So why it is giving the answer to, tell me. So ये कहां से स्टार्ट कर रहा है ढूंढना, इंडेक्स 3 से। So इंडेक्स 3 से जब स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करेगा, so it will give the index which is the last index when it is start searching from 3.
तो ये क्या मिलेगा इसे, यही ए तो मिलेगा, यस और नो, यस और नो। यस यस यस, वो पीछे से चालू कर रहा है इसलिए। हाँ पी, तो ये जो लास्ट इंडेक्स मतलब ये स्टार्टिंग है कि लास्ट कहां से इंडेक्स स्टार्ट करना है, तो ये 3 से पहले स्टार्ट करना शुरू कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर देखो इफ आई विल पुट इट समथिंग लाइक दैट, अगर मैं इसको दे देता क्या, लेट मी टेक द एग्जांपल, अगर मैं इसको दे दूं इट इज 3 4 5 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसका मेरे ख्याल से ये क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ मैं इसको 12 देता हूँ। अब देखना व्हाट विल बी द आंसर। So what is the answer you are getting? क्योंकि देखो क्या है 10. लास्ट, ये स्टार्टिंग का मतलब देखो यहाँ पे कंफ्यूज, डोंट ट्राई टू कंफ्यूज। लास्ट इंडेक्स मींस ये किसको लास्ट इंडेक्स मान रहा है कि जहां से आपको आगे की तरफ बढ़ना शुरू करना है, तो इसने बोला 12 से शुरू करना है, तो 12 से पहले जब शुरू करेगा सो इट विल फाइंड दिस कैरेक्टर, यस और नो, एंड द पोजीशन ऑफ दिस कैरेक्टर इज 10। 10. अगर मैं इसको बोल दूं कि तुम्हें स्टार्ट कहां से करना है, तुम्हें स्टार्ट करना है यहां से, तो इट फ्रॉम देयर इट विल स्टार्ट सर्चिंग टू द बिगनिंग, तो यहां से जब स्टार्ट करेगा तो उसे लास्ट इंडेक्स क्या मिलेगी, ए मिलेगी, यस और नो, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? No, sir, Yes. still confusing. सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, मतलब जैसे आपने A12 लिखा है, हाँ जी, A12, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, इसका मतलब हमें मतलब लास्ट से ना सर्च ना करना है। ना देखिए, इस 12 का मतलब है कि आपको 12 वाले कैरेक्टर को लास्ट मानना है और वहां से शुरुआत करना है, ढूंढना पहले की तरफ फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ये कहां से ढूंढना स्टार्ट करेगा, ये मानेगा कि 12th पोजीशन ये है, यहां से इसको इसने मान लिया कि आप एक्चुअली इसे क्या दे रहे हो कि इसके लिए आप बता रहे हो कि यू हैव टू कंसीडर दिस एज ए लास्ट स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स क्या मानना है, 12, भले इसकी लेंथ कुछ भी हो। तो इसने बताया कि आपकी लास्ट इंडेक्स अगर ये मानता हूं तो इससे पहले जब ढूंढना शुरू करोगे, सो व्हेन यू विल गेट द ए, यही वाला है पहले मिलेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी पोजीशन क्या मानी जाएगी, 10। अब देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, सर अगर मैं यहाँ, पोजीशन तो ये शुरू से काउंट करेगा ना, हाँ पी तो से काउंट करेगा, 0 1 2 तो से देखो 10 ना, हो गया है ना, तो ए। हाँ 10 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 8। अब इस 8 का मतलब है कि आप अपने फंक्शन में बोल रहे हो कि आपको जो इंडेक्स फाइंड करना शुरू करना है उसमें इंडेक्सिंग आपकी स्टार्ट करनी है 8 से। 8 मतलब इट इज दिस, 8 मींस द लास्ट इंडेक्स 8, मतलब जो आपकी स्ट्रिंग, आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि आपको ये मानना ही नहीं है कि आपकी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, आपको मानना है कि आपकी स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है, 8। 8 तो तो सी आपकी पर स्ट्रिंग, आएगा ये। तो ये सी पे आएगा, तो इसके लिए इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। ये कंसीडर क्या कर रहा है, ये हम्म मान के चल रहा है कि आप यहाँ पे, यहाँ से आपको ढूंढना शुरू करना है, और लास्ट इंडेक्स का मतलब यहाँ से पहले जाओगे, लास्ट इंडेक्स मतलब इससे पहले ढूंढना शुरू करोगे, तो सी से पहले ए तो कहां इसका आंसर मिलेगा, 2 आएगा। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो आपकी ए है, दिस इज द लास्ट इंडेक्स, ये वो लास्ट इंडेक्स है जिसको आपको कंसीडर करना है कि आपकी स्ट्रिंग का क्या है, ये लास्ट कैरेक्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? No, Still, sir. Sir, one request, sir. Please try to convey in English. I'm not okay, sure. understanding English. Okay. So now tell me, you are getting this point. You got this point, or you are still confused? Still confusing, sir. Okay, tell me one thing. I'm telling you the first parameter is this parameter is the character which you want to find. Okay, and the second parameter, this parameter is actually telling. In simple word, you can say, consider last character of the string. Means you have to consider that this is the last character of the string. You have to consider it. Okay, your string contains the last character 8. Yes or no? Yes, sir. But you have to consider, in case of when you are giving this index, it means in your string you have to consider that your last character of the string is at position 8. So for the timing you can consider which is position at 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. So you have to consider that just for the time you can consider these characters are actually do not exist. आपको मानना ही है that your consider string contains 8 position. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. So this parameter is actually telling the last character of your string. I know that it contains multiple characters, but you are forcing that you have to consider the last character 8. Getting my point?
Now Yes, sir. this is, now you can assume that this is your string. So now when your function will start searching from the last, which character, which at which position it will find the character A? This one. Two. Yes or no? Yes, sir. Okay. So now what is the position of this character? 0, 1 and 2. Getting my point? Yes, sir. Now I am understanding. Okay. So that's whenever you are giving the last, and when you are not giving, just think about that. When you are not giving this thing, so in that case, by default, it consider the default last character of your string. When you are not forcing, when you are not saying that you have to pass the last index from which is it should start searching. So what it will do, it will consider the last character as a last index and it starts searching from here. So this time answer will be 10, 10. because this is the last character from the end. And this is the character which it is finding from the last at the first position. So it is, now you got it. Yes, sir. Got it. Okay, now come to this second str1 dot, and we are going to learn another function is empty. So now what is the use of as empty? It is also a very good function. What happens sometimes when you are passing some string, maybe the string is empty. Okay, you can take the example this one, and here one beautiful part is that, and that is very, very important. When you are putting a space, when you are putting a space, so space is also a character. Getting my point? So what is the you can say result of return type of this empty function? Boolean. So I'm saying res. So tell me, when I print this answer, what will be the output? Res. It will be true or false? Tell me on the basis of your logic. False. False. Getting my point? Because I told you, character is also considered as a character. Oh, space is considered as a. Now, if I will say remove everything, simple double quotes, nothing is, then it will be considered as empty. Yes or no? Yes, sir. So don't always try to think about that. Always, whenever you are giving the interview, at the time of giving the interview, you have to remind in your mind that whenever there's a space means there's a character. It is not empty. Empty means double quotes without any character. Without any character. Getting my point? Yes. Yes, sir. Okay. Now we will go to the next function. str1 dot str1 dot. Let me go to the next function. Last index we have got length, and length is, wow, very, 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 very much used function. So what is the return type of length? Who will tell me using this syntax? What is the return type of this function length? Integer. Int. Very good. And string is the class in which this contains. So if we want to call this function length, we can store in a integer variable. Integer variable we have used, yes. Let me create another int length. strlength. So I will print this. So what will be the answer? What is the length of a string? 1. 0. Length means number of characters. So because it contains no character, length is 0. Now if I will write PRA, so answer will be 2. no. Length means Three. they are talking Can about the I number start of from 1, characters. right, sir? Sorry. Yeah, sorry, please come again. Sir, in string it will start from 0 index, right? But in Yes. length it will consider from 1. Yeah. So because the thing is that when you are talking about indexing, you are talking about the position of characters. But when you are talking about the length means number of characters. It is number of characters are 3, but the position is 0, 1, and 2. Getting my point? Yes. 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 So string length is giving the number of characters. Okay. Now let me come to the next. str1 dot. Okay, just forget about this notify all, because these are the development concepts which are used in multi-threading programming. Okay, now we'll एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत देर से पूछ रहा हूँ. मतलब एक आ रहा है कि स्ट्रिंग इज अ क्लास, स्ट्रिंग इज अ क्लास. वो हमको क्लास कहाँ पे दिखाई देगा? मतलब ऐसे कहाँ पे वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्लास की? हाँ, हम वहाँ पे जाके ये सारे मेथड देख सकते हैं.
Okay, okay. So these are the class, you can say. Okay, first of all, let me explain your question so that everybody understand. He's asking that for where I can get all the functions, whether this string class contains all the functions. You can see here when you are calling str dot. So this is the class and this is the reference. Yes or no? So when you are saying that str dot, actually you are able to see all the functions. Getting my point? But still you want to see the structure of a class, like if you want to say that this student class is my own class, yes, and you are able to see these functions. So agar aap aise class, if you want to see this class, you cannot see the .java file. Reason is that student.java is created by you. That's why you have a source code as well as .class file. Getting my point? But when somebody in the market sell their class, sell their Java code, they don't provide you .java file. .java file is the source code. They don't provide you the source code. They only provide the compile code. You want to see the compile code string class? Press on control button and click on this. Are you able to see string.class? Okay. And this contains all the function, but you will not able to understand. Okay, bytecode is here, bytecode is written, so still it is trying to give you, but for you it is something meaningless. Yes or no? Yes. And this मुझे वही लगा कि जैसे अपन अपना क्लास देख पा रहे वैसे उनका वो भी क्लास देख पाएंगे, ऐसा लगा मुझे. Yes, but the thing is that they always try to write in the program in such a way, agar if you will try to understand each and everything from their dot class, you will create your own code. Why you are going to buy? Yes or no? Got it. So this is just like a security things that whenever, but still people can do this. There are so many softwares which can compile where they can provide the reverse process from .java to .class. This is called compilation, and from .class file you can create a .java, and this is called decompilation. Okay, that is possible, but so many other things also comes to the picture, so that decompilation is not easy. Okay, so that is another topic that is not related to here. So let me come to here. Got it. Okay, so when we are talking about the length, we are going to talk about, so you can say other functions. We are talking about this one, replace. Okay, so we have replace function comes into, you can say two flavor. One is, you can say, replace old character and new character, and replace where you want to convert, you want to replace the whole one string with the other string. So you can take the example of anyone. So I'm giving the example. So for example, here I'm writing PRA, let me write PRADEEP. Okay, so if you want to replace the character of E, if you want to replace the character with E with some other character in your string, you can do it. How? You can say replace, okay, and you can say target, means on which string you want to perform the replacement, str1, and which character you want to replace, that is E, and by which character you want to replace, you will write in the replacement section. So I want to replace E with T. Getting my point? Yes, sir. And it will give the final string. So now what is the use of replace? When you want to replace any character or any sequence with some other character or sequence. So here I'm giving the example where I want to replace every E with T. So you will see what is the answer of final str. Now it is given PRADEEP. Is it okay? So sometime you have to achieve this. Okay, now second thing, you are replacing the character by another character. You can replace the string also. Suppose I want to replace this DEE. I want to replace the DEE with a, you can replace with a character, or you can replace with some other string. You want to replace a DEE with only T? Yes, you can do it. Just see here. You are getting? Yes, sir. And you can replace with some other. Suppose with in place of DEE, you can you want to write FUN. So FUNNY, suppose. So it will replace the DEE with the funny. Getting my point? So you can replace single character with the single character. You can replace single character with the some string also, and you can replace a string with the single character, or you can replace a string with another string. So everything is possible. Getting my point? Anybody have any doubts? Everybody is good. Gulam, Payal, Ravina, Rabia, Ranjita, Shreya, Shruti, and Sukesh? Yes. No doubt, Yes, sir. yes, no doubt. Great.
Yes. Okay, so let me come to the next. We have learned the replace, and now we will talk about the you can say replace first. Okay, what do you mean by replace first? It will replace only the first occurrence. Here you will see it is replacing every character, but when you call replace first, it will replace only first occurrence. Okay, so what will be the result? If I will say PRAD and replace the E by T, so it will replace only the first E with the first T, and let's all the remaining will be the same. Getting my point? Say yes or no. No, sir. No. Okay, let me do one thing. Here I'm writing regular expression E, and here I'm writing suppose T. And let me store in a variable final str, and let's see what will happen. So you are able to see only the first E is replaced by T, and the second one is same. So when you want to replace the only first occurrence, then you have to use replace first. Okay, when you want to replace everything, every place, then you call the function replace. str1 dot. Okay, this is split function we will learn when we will talk about the a concept that is called array. We will cover after this topic. So just forget it. Now start with. Who is going to tell me what is the use of start with? It is similar to end with. Anybody can tell me? Starting from the zero, index zero. Yes. Yes, it will start with it. Yeah, it will start with when it is starting from the, you can say, so you can tell me start with. Start with, you can say here prefix means you are giving the index. So let me start with if I will say PRA, so answer will be true or false? True. Yes, because we know that in this case the answer it will be satisfied and answer will be true. And if I will say if I will say, just see here, if I will say PRA, just see what will be the answer. Are you getting my point? Yes. So by default, consider the case also. Okay, so this is called start with. Now start with also comes with a flavor. First of all, let me make it a true one so that you can see it is true or not. Okay, now you will see there is another flavor of start with. What is the another flavor? Where you can decide the indexing also. Start with int t offset. T offset means from where you want to Start. start. Getting my point? So let me, you will use it by your own. Kuch function aap khud bhi to karo. Then you will revise, okay? So let me str dot. So you will practice these things and come to me. Now let me cover another function. Now this is very, very widely used. Trust me, very widely used function is substring. This is very, very widely used. I can bet on that whenever somebody will give you a program to write a logical program, 90% you have to use this concept, substring. Anybody know what do you mean by substring? It is similar to the contains. But what was the return type of contain function? Boolean. What was the return type of contains functions? Boolean. Boolean. So, Boolean. So what it was returning? It was just checking that whether first string contains the second one or not. Getting my point? But it was not Yes. returning the string. It was just returning the answer true and false. If you want to cut some portion from first string, then you have to use the function substring. So I will show you by the example substring. So for example, if you want to cut the string, let me first of all put it here. You want to cut the string from the index, suppose index from 2.
Are you getting my point? So I will give the index 2. So what it will do? It will cut the string from index 2 and will return to you. So what will be the answer? Are you getting my point? What is the use of substring? It will cut Yes. a part of the string from given index. From given index, it will cut the string and return rest of the string to you. So it has cut the string from 2. So A D double E P. Getting my point? Yes or no? Yes. So in this function, but what is the thing? It is only expecting the begin index. It is not telling the last index. So that's why from the begin index, it will consider till last. Getting my point? Yes, sir. And there is another flavor of this function where you can give the last index also. You want to see this one, begin index and last index, or you can say an index. So here I'm going to write one thing, and that is very, very important. Just see, I'm writing 2 and end index I'm writing 4. This time you will give me the 100% wrong answer. I'm sure. You want to see? Tell me what will be the answer. Anybody will tell me the answer? Just a minute, sir. Yes. So begin index is 2 and end index is 4. So what will be We'll the print answer? AD, I think. AD? AD. Oh, okay, I'm running the ADE. AD. Oh, now we have got two answers, and you will see surprised. One answer is right and one answer is wrong. And this is not the fault of your logical part. Actually, because this is the rule of Java. It is not your fault. Logically, you can say logically answer is ADE. Getting my point? Logically, the answer is AD, because you are saying that you have to start from 2 and you have to end at index 4. But Java do not consider the last index. Java consider that is the end index. So you don't have to consider the end index. Before end index, you have to consider. So it will consider 2 to 3. Getting my point? Yes, sir. So if you want to give the ADE, actually you have to give the index 5. 5. Getting my point? So that's why I'm saying that it is not your fault. It is written in the same way in Java. ये Java में ऐसे लिखा गया, that's why you are getting the answer. So you have to make sure whenever you are calling the substring function, last index means the before the last index. Last index is not considered. Getting my point? सर अगर हमको ये सपोज हाँ जी। 2 से लेके एंड तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे फिर सबस्ट्रिंग में? अगर मुझे सपोज AD डबल EP लेना है उस इसमें string So में. in that case, you don't need to give the last index. But when you are not giving the last index, in that case, just consider the begin index and Okay. last index. Okay. Sorry. So it contains the two flavors. Getting my point? Got it. Sorry. So when you want to give the start index, it will consider till last, and you want to break the last, you want to give the last index also, it will take that parameter. So it contains two functions. Getting my point? उस केस में वो दूसरा फ्लेवर काम में आएगा. Yes. Okay. Now we'll come to the next STM. Yeah. Anybody asking anything? हाँ सर, ये सब स्ट्रिंग वाला मतलब कॉन्सेप्ट में 2 and 4 दिया जो आपने, तो Yeah. फर्स्ट एक बार फिर से बता दीजिए. फर्स्ट जो ये होता है इसका कंपोनेंट ब्रैकेट के अंदर, वो क्या स्टार्टिंग इंडेक्स डिफाइन कर रहा Yes, that is starting index, and that is called end index. But the rule for end index is that if you have given the end index 4, so it will consider just one before it. Okay, so it will consider 2 to 3. तो सर ऐसा नहीं होगा इसमें कि मतलब 0 1 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 till 4 it will return the string till 4 up to No, 4 means. that's fine. Say actually logically it should be, but it is written in Java that it should not consider till 4. It should consider 2 and 4. 2 and not 2 and 4. It will start from 2 and will go to the index 3. इसने last index is not considered. It means when you want to consider the index 4, you have to give one more. Okay. If you want to return the substring till 4, then need to give the target as a 5. Yes, so it is. That's why I'm saying that logically it is not anybody's fault, because anybody will tell me if what is the character it will return 2, then 3, and then 4 and 5. But the reason is that it is written in Java that last index should be not considered. I don't know why they have written this. It is really very confusing. Okay, but you have to consider as it is written in Java. Okay, Now you sir, got it. is there any other function? Sir, is there any other function where it will start from 2 and
टिल मतलब 5th लेंथ तक यानी 4th इंडेक्स तक वो उसका कंप्लीट रिटर्न करें. ओके, द So सेम थिंग इज दिस. no, no, ठीक no, है no, सर. no. That is not function. This is the only function. It is written in this. Getting my point? So there is not separate function for. Now I will ask you a logical thing with everybody. सबसे पूछूंगा. चलो पहले I will ask you who is going to tell me. अब एक को प्रोग्राम आपको देता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम. The small program is, can we give me, here I'm writing any string. I'm not sure that I will write Pradeep Chand. I can write Ranjita S. I can write Shreyas, something which contains 2 characters, like Sukesh Anand. So you have to write a program so that I will get the last name from the string. Can anybody write a program for me? How you can achieve that? I want to get the last name from the string str1, whatever is last name written. Anybody can tell me, write the program for that? First we have to split with space. You have to split with the space. Okay, you don't have to use the split, because split I have not told you till now. कोई बताएगा? Sir, we can write by using a substring, right? Yeah, okay. In case of substring, what will the parameter? Parameter first I have to check. Means सर या सर जहाँ से चंद स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपके नाम में प्रदीप चंद लिखा हुआ है, तो Okay. अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा वो सी का जो पोजीशन होगी वो होगा. yes. मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 9 10 but the 11 thing 12 is, 14 I got 9 and 14. Yeah, I got your point, but you are giving me the hard-coded value. Suppose, take the example, somebody has given some another input, so case. So now the position will be changed. So you have to write a general program so that it can return the last name. Are you getting my point? Yes, sir, it will print if you have give long name, right? Yes, yes, yes. So it will be different. So you have to write a common general program so that it will be applicable for any type of input. Like we are giving any name, Sukesh Anand, Priya Bharti, Shahrukh Khan. So it give me the last name. So you have to write a logical program. So I will give you a hint. Now tell me, in any case, the last name will start after this space. Yes or no? Yes, sir. Yes. So simply you have to write a program where substring is and the starting point should be after a space. So index of, you have to cut the string where the space after a space. Yes or no? Yes. Yes, sir. So you can do one thing. First of all, write a program. Simple, write a, you can say line str1 dot index of space. Yes or no? Yes, sir. So it will give you the index of space. Yes or no? Yes. And it should be work as a big index for you. Yes or no? Yes. This should be work as a big index in your substring. Yes or no? Yes. Now it is working fine. Just see. Now it doesn't matter whatever. Here I've written, oh sorry, begin index, it is considering this space. Yes. So you have to get begin index plus 1. So now you have written a general program. It doesn't matter your input is Sukesh Anand. It doesn't matter your input is Pradeep Chand. Pradeep Chand. Getting my point? You will get the answer Chand. Sir, why we added +1? Yes, I have added a +1 because the begin index consider the begin. So you are considering the begin means it is considering the space, and we have to consider after a space. So we are starting after a space, one more index. Getting my point? Yes, sir. Yes. And you can take the example of any big string, like write some you can say meaningless, then a space, so it will return because logic is written. First of all, find the index of space and then start after that. So we have written a general program. So these things can be asked in the interview. Are you getting my point? Yes, sir. सर चलिए। +1 मीन्स जो भी स्पेस है उसके पास से जो भी जितना भी स्ट्रिंग बचा हुआ है वो सारा रिटर्न करेगा. नहीं नहीं नहीं, +1 का मतलब इन द बिगिन इंडेक्स, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग करनी है, योर इंडेक्स शुड बी फ्रॉम आफ्टर, इट शुड स्टार्ट आफ्टर द स्पेस. स्पेस को कंसीडर अगर हमने देखो बिगिन इंडेक्स दे दिया तो इट विल कंसीडर द स्पेस आल्सो. तो इन योर प्रिंटिंग स्पेस विल आल्सो बी कंसीडर्ड. ये देखो, आर यू एबल टू सी स्पेस इज आल्सो प्रिंटिंग. Yes. So that's why we are starting +1.
सर प्लस Getting- 1 नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो लास्ट जो ये सब स्ट्रिंग है तो +1 के बाद जो भी लिखा होगा वो सारा रिटर्न करेगा। Yes, yes, yes. So that's why to remove these doubts from your mind, I'm asking another logical program, and that is this time I'm writing Pradeep. Suppose your program contains three, you can say name with three things: first name, middle name, and last name. You have to give me the middle name. Can you write the program for me? आपको मुझे you have to provide me the middle name only. सर इसमें फर्स्ट इंडेक्स यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स So okay. So what will be the and first index? फर्स्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ स्पेस, इट शुड बी द फर्स्ट इंडेक्स, मतलब जहाँ से Okay. फर्स्ट स्पेस स्टार्ट हो रहा है So वो I can फर्स्ट। so I can say this. First index will be str.index of space +1. Yes or no? यस है ना? So first index will be this one. Now it will automatically fetch the after space. It will consider first. So this is big index. And what will be the last index? Tell me, tell me, tell me, tell me. Tell me. You have learned so many functions today. You can tell me the That is answer. last index, sir. Yes. LAST last index. And last index equal to str. This time you have to call the function str1 dot last index of space. Yes. Okay, this one. Now you have to simply call the substring method begin index comma end index. Yes or no? End means last index. So last index will be considered as a begin index. सर यहाँ पर Sir, फर्स्ट it's इंडेक्स shifting आएगा ना? error. Yes. Actually, I've First taken the index. So I've taken the variable name. Okay, now just run it. You are getting churn. यस Now it doesn't matter. You can write any string. You can write SHARUKH Saruk Singh Khan. Let me write some unique name. Sharuk Singh Khan. So it will return. It should return Singh. Because this function is written in a general way, so it will return Singh. Getting my point? Yes, sir. Okay. So can anybody tell me? I just want to check your logic. I don't want to use the last index function. Can anybody tell me without using the last index function, can you write this program? यस सर, इंस्टीड ऑफ लास्ट इंडेक्स हम लोग सब स्ट्रिंग में मतलब टारगेटेड इंडेक्स का वैल्यू दे सकते हैं ना, मतलब जहाँ पर ये चंद खत्म हो रहा है उससे +1 करके वो इंडेक्स का वैल्यू अगर फर्स्ट इंडेक्स कॉमा और वो इंडेक्स का वैल्यू देंगे देन आई थिंक रिजल्ट आ जाएगा। Excellent. Clapping for you. Excellent. Now the simple thing is that you can consider this is actually first index. So meaningful. Let me give a meaningful name variable. Every logic is same. So I can say begin index. Yes or no? This is actually begin index. And last index we are actually try to find out the end index. Yes or no? This is our logic. So now begin index. What is the begin index? Begin index is okay. That we are getting the Yes. after space we are getting. Now last index we have to consider this space. Getting my point? So now you can do one thing. You can make a clever thing. What Rabia told us. You can do one thing. str1 dot index of. You have to call again this function index of. But this time you have to call the flavor from index also. So what you will do? Just see here. You are trying to find the space. But this time the searching index, the starting index will be whatever index you have got previously, just one more than that. Getting my point? Yes or no? मेरी बात समझिएगा. You have find the string begin index. When it will call this function, where it will get not write to +1. You don't need to write even. Now tell me, what will be the output of this one? Tell me. The first space after first space S. Yes or no? Yes. Now when I'm calling the function index of on the same string, but when I'm giving the begin index, what is the begin index value which I have first last line? It will return S. Yes or no? Yes. So it means in this function it will start finding the space after this S. So it will get the index of this one.
Yes or no? Who is not getting? Arey bolo to, please tell me. Who is not Sir, can getting? you repeat, sir? I'm not getting. Okay, tell me one thing. Let me do one thing. First of all, let me remove all these functions. Let me remove all these functions so that you can find it easily. Let me make a dry run. Okay. Now tell me one thing. What is the purpose of your, what is the aim to find the middle string? Yes or no? And how you Yes, can sir. find the middle string? When you make a begin index should be after this space and end index should be this space. Yes or no? Yes, sir. So you know that first way you have already got it. The first way to find the first string is very easy. Index of space plus 1. Is it okay? You got the begin index? Yes, sir. Now you want to find the second space. So you have two ways to find the second index. You can call the last index function. That is the easiest one. And second is that you can find the index from the starting, but you have to anyhow start searching after this space. You have to ignore searching this space, means you have to start searching after S, after search. When you try to find the space after S, it will obviously find this space. Getting my point? Yes, sir. No, you are not getting. Getting, sir. Okay, so in this case, what happens? So you have to give another favor. I want to find the space, but my searching index, searching point will be S. So it will ignore this one. So now this time, which index it will find? This one. And then you pass begin index and end index in your function, and the answer will be 6. Getting my point? So this Yes, is the sir. way to write a program in different ways. I'm writing Pradeep Chand Nalwa. The answer will be this one. Still you are not getting, don't worry, don't think about it. Sukesh, you are getting. Shruti, you are getting. Yes, sir. Shreyas, you are getting. Yes, I'm getting. Okay, in anybody, if you are not Shruti, still I am asking again. If you have had any doubt, you can ask me, Shruti. No, sir, it's clear. Clear. Gulam, what about you? You are clear? Ranjita, what about you? Yes, sir. It's fine. It was clear. Okay, it clear? So if it is not clear, still you can see that one by one try to run the program, and it is called the logic. So once you will try to make so many practice, then logic come to you. Or still you have a doubt, you can come to. Is it okay? Okay, Chal. sir. str1 dot, we are going to learn the another function. So str1 dot. Okay, I will request everybody that whenever you are asking a question, so if possible, try to speak in English so that everybody can understand. Okay, so you can ask me in the both things, but I will say that prefer in English. Okay. Let me see what else function is there. Oh, substring we have done. Now we have lowercase. So everybody know what is the use of lowercase when you want to convert your string into the lowercase. So you will see what is the, let me store in a final str. So actually it will convert the string in the lowercase and return to you. Let me run it. Yes, everything is written in lowercase. In the same way, you can convert into the uppercase. Uppercase. So now in this case, it will convert. It doesn't matter it is written in the lower or upper, but it will convert into the uppercase. So these are the functions. And let me see if any other function is left. So. Yeah, one function is string. So this is also one good function. What is the use of string? Anybody have heard about it in your any other software? Yes. In Space remove SQL. करता है. Yes, in SQL we have also learned this. You can say Yes. functions is there, but in that case it contains two functions: ltrim and rtrim. Yes or no? Yes. But here we have only one function. So what is the use of this function? Actually, whenever your string contains any space, only in the between or in the end. If it contains any space in the between or end, then it removes it. Are you getting my point? Just see here. मैं इसको print करूंगा. I'm going to print it before a trim and after a trim, and you will get the answer.
ये देखो, this will print before trim and it will print after trim. You will see the difference. Let me run it. In the console, you will see the difference. Are you able to see the difference? Oh, sorry, final str. Okay, actually I have written this logic. You should not write any logic here. So let me write the simple str. And then final str is actually after trimming. Now you'll see the difference. Are you able to see the difference? Yes. When पहले I'm space printing, yes, when I'm printing the simple str, it is starting with the space. And when I'm calling a final str, when I'm calling as final str, actually I have stored after trimming. So it removes the starting Space. and the ending space. Ending you are not able to see. You want to see that, you can see here. Are you able to see? It is at last you are able to see this space also. This one. Okay, but here you can say it is only printing the after. So this is the use of trim. Is it okay? Yes, sir. str1 dot, and now we'll go to the wait, you don't need copy format, just forget about. So these are the important functions you should learn. You should have a good knowledge if you want to write a good program. Okay, and also this class is very important in terms of automation, because you will say in automation, when you are going to validate so many things, these functions are very, very important. Getting my point? Okay. Anybody have any doubt? No, sir. Sir, I have one question. Yeah, Payal, tell Pioneer, me. Pradeep. Yeah, Payal, tell Yeah, me. Pradeep, like before this, whatever we are writing it out for that last name, middle name, okay. If Okay. this Pradeep Chand Nelwal is having one more word will be there, like sing or something, we are adding up after space. Okay. After space, you add something like sing or some name after No, Nelwal. tell me, I have to add it here after Nelwal. I have to add something. Yes. Okay. Yes. Yeah, Yes. tell me. And we want to find it out for Nelwal. Okay, so my point is like in begin index, it's getting the first space. After Pradeep, what was the first space it took? But if Yes, we yes. want for Nelwal, then Yeah, that's why I'm saying that in this case, my logic is more good in comparison to the last index, because if you call the last index function, it will return this space. Yes or no? yes. But in my logic, what I'm And trying if to do, I'm with trying the to last find out index, the I'm trying to find out the second space from the starting. Yes or no? yes. So still you will say, if I'll try to print this one, you will say in this case also, I will get the answer Chan. Just see here. I'm getting the answer Chan because I'm trying to find the first space, then second space. So it is returning this one. If you call the last index, then your logic will be wrong. Getting my point? Okay. Yes. Okay. So that's why it also depends on that. What is your requirement? Why I've given you the particular scenario? Because sometimes you have to manipulate the things by your own logic. Getting my point? Yes. Okay. Yes. Okay. Now here I can ask you one question also, and it is also logical. Can you tell me? You can say like, let me check. We can tell me or not. No, that question, that program is not applicable today. Till the time I'm not completing the split function. Okay. So anybody have any doubt? Otherwise, I can bind the session, or you want to proceed with the session? If everybody is, you can say, not exhausted. Can we go with the next topic, everybody? Sir, I think we should take it to the next class. Right, I got. That's It's why I asked already you. 11:45. No, I got it. I got it, and we don't need to be in hurry, because trust me, we are on very track on our syllabus. We are doing very well, and we are going with the proper. And we will, if we will go on the same pace, we will complete the syllabus on time. Okay, but I will say that don't focus on the time. Focus on your learning. If your Java will be good, your Selenium learning will be easy. Okay, so I'm binding the session. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you, Have a sir. nice thank you so much. Thank Thank you. you. Bye. Bye.